Hello students, welcome back to my channel Lightup Knowledge and very warm welcome to today's video. I hope you all are doing well. In today's video, we will be continuing our series of MCQs on nouns and this will be part 4. So welcome once again to Mega MCQ grammar series, and this is a grammar series which is important from the perspective of all competitive exams. So आज के वीडियो में हम 10 और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड it will be related to nouns. So without any further ado, let's get started. Question number 31 is, he was convicted as all the evidences proved him guilty. He was convicted as all the evidences proved him guilty. Observe the sentence carefully and try to find out an error. So if you will observe carefully, you will come to point number B, option number B, and you will observe evidences, right? So basically evidence is an uncountable noun और हमें पता है by the rule कि जो uncountable और abstract nouns होते हैं उनके plural formations नहीं होते हैं, right? So evidences की जगह correct answer है evidence, as all the evidence. So therefore there was an error in option number B and the correct answer to this is evidence, not evidences. The next question is, he figures among the great men who won acclaim by resolute passion towards their pursuit. He figures among the great men who won acclaim by resolute passion towards their pursuit. Observe it carefully and try to find out error. So if you will observe, you will come to option number A. ठीक है, हम एक preposition देखते हैं among. तो जो among का use है mostly इन तरीक़ों से होता है कि it's just one thing among all the other things. तो हमेशा plural sense में use आता है, okay, in the company of other things, right? So जब हम प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं जो तो हम नाउन भी आगे यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा, इसलिए मैन नहीं होगा, मेन होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ ग्रेट मेन. नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 है, नॉट ऑल यंग किड्स आर गिवन टू मेकिंग मिसचीफ्स, सम आर रियली डिसिप्लिन्ड. Not all young kids are given to making mischiefs, some are really disciplined. So you have to find out an error in the sentence, और sentence में error हो भी नहीं सकता है, दोनों options हो सकते हैं. So apply your knowledge and try finding the correct answer. So observing, you'll come to point number B and look to the abstract noun mischiefs. हमें पता है as the rule suggest कि जो abstract nouns होते हैं और uncountable nouns होते हैं उनके plural formations नहीं होते हैं, they are always used in a singular form. तो mischiefs की जगह mischief होगा. So there is an error in option number B and the correct answer is mischief and not mischiefs. Question number 34 before us is, one must never put one's sign on a document without reading it. One must never put one's sign on a document without reading it. Observe it carefully and try to find out an error. So while observing, we come to point number B where we see the word sign. So sign एक noun होता है जिसका मतलब होता है some gesture or action which is conveying something, right? but यहाँ पर हम हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं यानी कि signature की बात कर रहे हैं, right? so therefore sign is a wrong word here because it has a different meaning. The correct is signature, one's signature on a document. So there is an error in option number B and the correct answer is one's signature on a document and not sign. Question number 35th is, my friends told me that there was no place for me on the bench. My friends told me that there was no place for me on the bench. Observe it carefully and try to find out an error, okay, because you should have
basic knowledge of nouns, and it should be from basic to advanced in order to solve these type of questions, right? So observing carefully, we come to ऑप्शन नंबर बी, देयर वाज नो प्लेस. प्लेस का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट होता है या पर्टिकुलर जगह होती है, ठीक है. तो यहाँ पर प्लेस की जगह होगा देयर वाज नो रूम, मीन्स किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं कि एक जना और भी एक्स्ट्रा आ सकता है. सो नो प्लेस की जगह द करेक्ट आंसर इज़ नो रूम. सो देयर इज़ एन एरर इन ऑप्शन नंबर बी एंड द करेक्ट वन इज़ देयर वाज नो रूम. नो प्लेस नहीं होगा, द आंसर इज़ नो रूम. Question number 36 is, despite the criminalization of child labor, several 10-year-olds still work in an unorganized sector. Observe the sentence closely and try to find out an error. So if you'll observe the sentence carefully, so यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है. ये सेंटेंस एक एरर फ्री सेंटेंस है. जहाँ भी नाउन्स यूज़ आए हैं वहाँ पर नाउन्स करेक्ट फॉर्म में आए हैं. सो दिस सेंटेंस हैज़ नो एरर. ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 37 इज, सिट केयरफुली द चेयर्स लेग इज़ ब्रोकन. सो ये तो सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन सीरीज़ का. क्यों? क्योंकि जो पोजेसिव नाउन है उसके रूल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है. बहुत इजी है. जब हम पोजेसिव नाउन का गलत इस्तेमाल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है चेयर्स लेफ्ट लेग, राइट. सो जब हम पोजेशन की बात करते हैं जो इनएनिमेट चीज़ों का होता है, जिनमें लाइफ नहीं होती है, तो हम पोजेशन ऑफ वाला यूज़ करते हैं और अपोस्ट्रोफी एस उन्हीं के पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं विच आर द नाउन्स विद लाइफ. सो यहाँ पर चेयर्स लेफ्ट लेग नहीं होगा क्योंकि ये एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, राइट. सो द करेक्ट आंसर वुड बी द लेफ्ट लेग ऑफ द चेयर. सिट केयरफुली, द लेफ्ट लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन. सो देयर इज एन एरर इन ऑप्शन नंबर बी एंड द करेक्ट आंसर इज द लेफ्ट लेग ऑफ द चेयर. Let us have a look at question number 38. Mother rearranged the furnitures anticipating the arrival of important guests. Mother rearranged the furnitures anticipating the arrival of important guests. Observe it carefully and try to find out an error. So if you'll observe, you'll come to option number A, furnitures. So furniture is an uncountable noun, and as I have told you many times that we do not form plural of an uncountable or an abstract noun. मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, हम उनके जो प्लूरल फॉर्मेशंस नहीं करते हैं, उनका एक ही फॉर्म होता है. सो जो करेक्ट आंसर है वो है फर्नीचर. सो देयर इज़ एन एरर इन ऑप्शन नंबर ए एंड द करेक्ट आंसर इज़ फर्नीचर. मदर रीअरेंज द फर्नीचर एंड नॉट फर्नीचर्स. फर्नीचर्स इज रॉन्ग यूसेज हेयर. Question number 39 is, the car driver changed gears as he approached the hillock. Observe it carefully and try to find out error here. So if you'll observe carefully, you'll come to option number B, right. So instead of changed gear, it will be shift gears or switch gears. Shift gears or switch gears is an idiom which means to suddenly change a course or a plot. So चेंज गियर की जगह स्विच और शिफ्ट गियर्स होगा क्योंकि ये एक इडियम है, ठीक है, और जिसका मतलब होता है सडनली प्लान में चेंज लाना. तो चेंज गियर नहीं होगा, स्विच या शिफ्ट गियर्स होगा. सो देयर इज़ एन एरर इन ऑप्शन नंबर बी, राइट. शिफ्ट और स्विच गियर्स. नाउ लास्ट क्वेश्चन इन टुडेज MCQ series is, the greedy king annexed territories after territories but was not satisfied. So try to find out an error if any. So if you'll observe closely, you'll come to option number B, territories after territories. So he annexed the a place one by one, right. So territory after territory instead of territories after territory. So there is an error in option number B and the correct answer is territory after territory. So yes guys, that was all for today's video. I hope you enjoyed watching this video and you found it useful. If you did, please like, share and subscribe to my channel. Do not forget to press that bell icon so that you can get regular updates of the videos that I upload. All the important links of the playlist will be linked down in the description box for you to check out. Until we meet next time,
keep learning and keep growing.